हेलो एवरीवन एंड स्टे लॉजिकल। ये पहले से ही हमें बोलना है। क्यों? क्योंकि ये है सितंबर 15, मिड सितंबर हो गया। कैसे हो जाते हैं एक हफ्ता खत्म, 2 हफ्ते खत्म, एंड वी आर स्टिल इनटू द रीडिंग पार्ट। वी हैव टू डू दैट, एंड एज आई सेड दैट you should be reading 1 or 2 extra articles apart from all that has been suggested to you. Here we are with the explanation of the first editorial of the Indian Express of September 15, 2023. That is the Anantnag warning. Warning. Reading part में देखते हैं. Most of you would have read this by now. So all acts of terrorism are criminal and unjustifiable. Statement. Very strong statement. All acts. So the G20 New Delhi, a leader's declaration read, regardless of the motivation, wherever, whenever, and by whomsoever committed. ये होता है stark, strong, concrete statement. These words from the diplomatic height table became more salient, important, their resonance more somber, serious on Wednesday after the killing of Colonel Manpreet Singh, commanding officer of 19 Rashtra Rifles in Kokarnag, Major Ashish Donjak, and Deputy Superintendent of Police Humayun Muzamil Bhatt by terrorists in Anantnag in Kashmir. ये हुआ प्रॉब्लम जहां पे लोगों को मारा गया टेररिज्म के नाम पे, और ये it is. This was a statement of the high diplomats. Colonel Singh became an officer in the 12th Battalion of the Sikh Light Infantry, same battalion where his father served as a Nayak. He received the Sena Medal in 2021. Like Singh's children, Major Donchak's 3-year-old daughter will not get to know her father. Bhatt's father, who retired as IG police, had to bury his son. These tragic deaths also bear a reminder. Peace and normalcy are still fragile, still all too vulnerable in Jammu and Kashmir. They must be protected through continuing vigilance. हम आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं अपने borders को. कंटिन्यू विजिलेंस चाहिए. ये हुआ इन्फ्लुएंस इस एपिसोड से. ये हुआ कंक्लूजन दैट दिस पीपल आर नॉट लीविंग. ये है कंक्लूजन कि टेररिज्म अभी भी वहां पे खत्म नहीं हुआ है. ये रहा. Now, what the author has used, why the author has used these examples to suggest something, to aim for what we can understand, is the author. यहाँ पे अगर author की tone भी आ जाती है, I know it is like ये पढ़ के ही पता नहीं क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची है, बस author क्यों यूज कर रहा है ये एग्जाम्पल्स का? ये हकीकत है, राइट. इन्फर क्या कर सकते हैं कि टेररिज्म में देखो कैसे लोगों को तकलीफ होती है when these people are unduly killed, right? What effect this terrorist activity is doing to the people? So we need to be more vigilant, comes as a conclusion कि ये करना पड़ेगा. ये टेररिज्म नहीं चलना चाहिए और न चलेगा. ठीक है, तो ऑथर का आप माइंडसेट समझ सकते हो कि जैसे अनंतनाग का ये एपिसोड हुआ, वैसे ही ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा हो. देखो कि क्या रहा है ये. दिस इज द थॉट देयर इन द ऑथर्स माइंड. एंड व्हाई इज ही गिविंग ऑल दिस? मतलब दिस पर्सन रिटायर्ड आईजी पुलिस से अपने बेटे को करना पड़ा. मतलब आप सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी. तो ऑथर भी हमें वहां पे थोड़ा सा इमोशनल इंटेंट के साथ बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट दीज पीपल आर गोइंग थ्रू, व्हाट इज हैपनिंग. In a sense, the killings in Anantnag run against the grain. To run against the grain, मतलब ये नहीं होना चाहिए. The bigger picture over the last few years in J&K, now a union territory. According to the Home Ministry data, there was a 32% reduction. ये data है कि there was a 32% reduction in the acts of terror between 2019 and 22 over 2016 and 2019. ये 3 साल और यहाँ पे 3 साल में 32% डिक्रीज हुआ. वेरी गुड. ये डेटा बता रहा है. Deaths of civilians were down by 14% and of security personnel by 52%. Data from 2020 up to June this year shows the steady decline in the local recruitment of terrorists. Recruitment भी कम हुआ. The increased security presence and attempts at dismantling local participation in networks of violence have had significant successes.
However, ये सब तो था, पॉजिटिव था, ये डेटा बता रहा है, लेकिन there have also been some disturbing straws in the wind. Recently, there have been attacks on security targets south of the Pir Panjal range in Jammu. अब ये एरिया बता रहा है कि देखो पहले यहाँ नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे हो रहा है. ये सिक्योरिटी टारगेट्स है साउथ Jammu, Rajouri and Poonch, which indicate a departure from the militancy post Burhan Wani. Departure from the militancy post Burhan Wani. After the killing of Wani in South Kashmir in 2016, young disaffected men were often recruited by handlers, given minimal training before they attempted the terrorist attacks. ये रहा अभी जो हो रहा है, there have also been disturbing straws in the wind. ये दिखने में आ रहा है. So he is coming up with again mentioning of this. Here they are giving you the data. This is again what is happening. These actors also had sometimes a presence on the social media. The shootout at Anantnag seems more a throwback to the 1990s with heavily armed militants indicating a more well-equipped adversary. इससे क्या पता चलता है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं हेवली आर्म्ड हैं, इसका मतलब जो उनके पीछे हैं, ठीक है, वेल इक्विप्ड, तो आसान नहीं है. और ये एक इंडिकेशन है, ये एक वार्निंग है जो ऑथर की हेडलाइन में भी था. इट इज एन अनंतनाग वार्निंग. सो इफ यू कैन सी दोज पीपल हेवली आर्म्ड, दैट मीन्स द एडवर्सरी इज नॉट अ वीक वन. Successes of the security forces in recent years notwithstanding, it is clear that maintaining peace and order will require continuing alertness, a robust intelligence network, and a strategic calculus that allows for nimble tactics. रोबस यानी इनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो यू शुड क्रीप इनटू ऑल दोस एरियाज जहाँ पे छोटी छोटी सी बात भी, या जो टेररिस्ट अटैक्स होने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इंटरसेप्ट कर सकते हैं. तो ये एक स्ट्रांग नेटवर्क इन्हें चाहिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए, और स्ट्रेटेजिक कैलकुलस चाहिए. मतलब वे दे कैन एक्चुअली टेक इमीडिएट डिसीजंस, they can actually go for the nimble tactics. Nimble is being very sure footed, quick footed, एक्टिव हो सकता है. कि ऐसा नहीं कि किसी एक के रूल के लिए पहले बैठा जाए कि चलो ये करो, उसका परमिशन मिलेगा, ओनली देन दे विल बी एबल टू डू. मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट निम्बल टैक्टिक्स हमें चाहिए, स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स चाहिए, और इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. दिस इज अ वार्निंग. द अनंतनाग इंसिडेंट इज अ वार्निंग, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, व्हाट इज इंडिकेटेड is this. ये काम कर सकते हैं. The uneasy state of India's relations with Pakistan points to the complexity of the challenge that lies ahead. इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता इस तरीके से हो गया रहा कि मतलब चैलेंज ही चैलेंज है इंडिया का सामने इनके. G20 declaration also said that effective counter-terrorism measures, support for the victims of terrorism, and the protection of human rights are not conflicting goals, but complementary and mutually reinforcing. For India, the deaths in Anantnag underline this reality, even as they are a grim warning of the perils of letting down the guard. इसका मतलब letting down the guard का मतलब होता है कि अगर हमने अपना जो डिफेंस है, अपना गार्ड है, उसे कम कर दिया थोड़ा, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं से आके ऐसे एपिसोड्स फिर कर लेगा. सो वी स्टिल नीड टू बी ऑन आवर टोस. वी स्टिल नीड टू, उसने कहा था, कंटिन्यू विथ आवर विजिलेंस. फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में भी उसने कहा, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में भी उसने कहा दैट नो, लेटिंग डाउन आवर गार्ड नहीं होना चाहिए, हमें अभी भी तैनात रहना चाहिए वहां पे. दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं है. दिस इज व्हाट इज देयर इन द ऑथर्स माइंड, राइट? सो it's really heavy. Terrorist strike points to fragility. Strike तो हो गया. Fragile is weak of peace in Jammu and Kashmir, and the need for continued vigilance. That is it. Letting down the guard, no. Continued vigilance, yes.
what has happened is a warning कि हमें अपना निरंतर मतलब हमें लगातार strong रहना ही पड़ेगा. We need to guard our borders, not let or not. Well, yes, we need to be cynical also. कि नहीं, we cannot hope, we cannot wish, we cannot. There's no indication कि हाँ दुश्मन कभी सुधरने वाला है या क्या. राइट, इस तरीके का ऑथर के दिमाग में बात चल रही है, तभी बोला है उसने कि कंटिन्यूड गार्ड, कंटिन्यूड विजिलेंस तो रहना ही चाहिए. वी कैन नॉट लेट डाउन द गार्ड. तो ऑथर का दिमाग समझेंगे हम कैसे इन क्वेश्चंस के साथ. सो यू कैन क्विकली राइट डाउन three answers. One, the conclusion from the first paragraph, assumptions from the second one, and main argument of the whole passage. जो अभी हमने डिस्कशन के साथ साथ हमने कर लिया है. सो नॉट अ वेरी बिग डील, पैसेज का पॉइंट समझ में आ गया है, राइट. कमिंग टू द टोन ऑफ द डे, टुडे इट्स अ डिस्पैशनेट टोन. अभी जो ऑथर का जो उसने बताया था कि एग्जाम्पल्स उसने दिया था, इट वाज लाइक वेरी इमोशनल, राइट. उसने वो लोगों का जो रीडर्स हैं, हमने रीडिंग किया, हमने समझा, और एटलीस्ट देयर वाज अ लिटिल थॉट इन आवर माइंड, और वी वर अफेक्टेड. यार, छोटी सी बच्ची है, वो कभी अपने पापा को नहीं देख सकेगी, या एक बड़े से पापा हैं, ओल्ड एज, ठीक है, रिटायर्ड पर्सन है, उसको अपने बेटे को का फ्यूनरल राइट्स करने पड़े. मतलब वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दोज पीपल माइट बी गोइंग थ्रू. सो इट इज नॉट अबाउट एम्पैथी, वी कैन सिंपैथाइज, वी कैन अंडरस्टैंड, बट द ऑथर यही इमोशंस निकालना चाहता है हम में से, रीडर्स में से. तो अगर उतना पार्ट लेते हैं अपन, तो वो इमोशनल था बड़ा, राइट. दैट पार्ट ऑफ द पैसेज वाज लाइक इन्वोकिंग इमोशन इन अस, राइट. लेकिन अगर इसी चीज को डिस्पैशनेट तरीके से कहा जाएगा, राइट. Dispassionate is ना मतलब the author doesn't come up with the emotions, author doesn't even incite emotions in us. वो instigate भी नहीं करेगा कि हाँ हमें वो emotions जागे, वो भी नहीं लिखेगा. तो he will not be using such examples, he will not be using such words also. What he is using will be very neutral, objective. कुछ मतलब नहीं है, ये हुआ ऐसा हुआ, ठीक है, अब क्या करना है, बस वो. तो dispassionate tone, it keeps the opinions neutral. दोनों साइड्स के हिसाब से वो बोल देगा अपनी बहुत सारी बातें, अपना ओपिनियन, वो इमोशन उसमें इंक्लूड ही नहीं करेगा. हमने ये वर्ड्स किए हैं, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, बहुत सारे वर्ड्स किए हमने. उसमें से एक और वर्ड हमने डिटैच्ड भी किया है, तो एक और वर्ड उसमें ऐड कर दो, एक डिस्पैशनेट टोन होता है, जहाँ पे पैशंस को मतलब पैशंस को दे डोंट इंक्रीज और दे डोंट रेज द पैशंस, गिव राइज टू द पैशंस, वो नहीं होगा. सो ओपिनियंस न्यूट्रल होंगे, किसी का साइड नहीं होगा, इट इज द सेम थिंग, न्यूट्रल तभी बोलेंगे. एंड नो पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं होंगी, ना ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जिससे फीलिंग एक्सप्रेस्ड हो, राइट. सो लेट्स चेक द गेस्ट लिस्ट. कौन कौन कल सेमिनार में आ रहा है, लेट अस सी. हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, लेट मी सी. तो इसमें कोई पैशन नहीं है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, आई एम सिंपली चेकिंग द अटेंडेंस रजिस्टर, द गेस्ट लिस्ट, right. I did not know the reason of his anger. I did not know the reason of his anger. बड़ा straightforward सा है. Oh my God, I could not understand the reason why he was so angry at me. इतना अगर बोलेंगे तो incredulous, हमने पिछले दिन क्या था incredulous. अभी ये I don't know why he is angry. Full stop. I don't know. I can't believe why he is so angry. ये हो गया change. I don't know मतलब simple सी बात है. So I did not know the reason of his anger or why he is angry. So there's no sentence, there's no word in this to suggest that you're feeling something. No, you are stating something. So dispassionate means statements होंगे बस, stated without feelings. सिर्फ कहना ये होता है. इमोशन के साथ कहना अलग होगा, सिर्फ कहना स्टेटमेंट dispassionate tone. I hope you'll be able to understand. G20 का समिट के ऊपर अगर किसी ने आर्टिकल लिखा, डिस्पैशनेट टोन में लिख सकता है कि G20 की समिट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, बस अपना ओपिनियन देना ही नहीं है उसमें. So dispassionate. That's all for today, and thank you. And I hope you keep watching these
editorial explained, and the remaining ones also, the ones that you have not seen, kindly take a deadline and complete those articles, listening to those articles before you go for the next test, because you'll be able to improve more in your CR, in your RC, and of course the understanding. Okay, that's all for today, and stay logical and have a nice weekend and have a nice day ahead.